Good evening, everybody. I know all of us have had a long day, and I have waited the entire day to be here. I would just request you to stay with me for a few minutes, and I have some very interesting stories to share with you, and I hope you get some takeaways from it and you enjoy hearing them, right? So I am Navya Singh. I'm a climate action journalist. I've worked with mainstream media, as I mentioned in my introduction. I've worked with India Today, Times of India, Quint, Logical Indian. I've done all of that for a few years. I used to report on defense, finance, women's safety, health, did a lot of stories, traveled to hospitals during COVID, did all of that. But then, even though most of our videos with all of these organizations got millions of views, there was no impact. And that's what I wanted to chase, which is why I quit my job and started my platform, which is called News with Navya. So what does News with Navya do? It's a channel that focuses on climate action and sustainability. It's 3 years old. When I started it rather, I was the editor, I was the writer, I was the camera person, I was the script writer, I was doing everything at once. To now when we have a team of 7 people, which is why I am able to be here while the content goes live on the platform, right? So when I started News with Navya, a lot of people told me that one news organization focusing on climate is not a good idea. Because climate is still not a mainstream conversation. हम अभी भी देख रहे हैं mainstream media में climate के नाम पर सिर्फ पंजाब floods, उत्तराखंड floods की बात हो रही है, and that too from a political angle. But do we talk about ये क्यों हो रहा है? इसके solutions क्या हैं? आगे का way क्या है? So we try and focus on that. The entire day we've talked about problems, crisis, threats, but there are a lot of solutions when it comes to climate action, and I'm proud to say that most of these solutions come from our country. And somehow we just fail to highlight that because we are so busy calling out the problems, calling out what's wrong with this entire environment situation, right? When I started News with Navya, the idea was to talk about solutions, stay away from doom and gloom. इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये नहीं बताना चाहते कि क्या हो रहा है. हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत इनोवेशन और बहुत सॉल्यूशंस भी हैं. अगर एक तरफ फ्लड्स हो रहे हैं तो उन्हें रोका कैसे जा सकता है, ये कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि अगले साल ये फिर ना हो, और कौन सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. आज के डेट में अगर आप और मैं यहाँ पे बैठ के उत्तराखंड फ्लड्स की बात करेंगे, इट्स इंस्पायरिंग, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. प्रॉब्लम सॉल्व होगी व्हेन वी लिसन टू पीपल हु आर देयर, listen to people who live there. So in the last 1 year, what I've done is I've traveled to cities that are not big cities. I've stopped traveling to Bangalore, Delhi, Bombay. I live in Goa though, but I don't travel to big cities because it's the same conversation with no impact, right? So I've started traveling to tier 2 cities, tier 3 cities, villages, and मेरा जो perspective रहा है, जो मैंने सीखा है, I think that has shaped a lot of stories that I do now. Recently, I went to a place called Devariya. किसी ने सुना है? Devariya is in eastern Uttar Pradesh. Yes. So Devariya एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप 2 दिन भी बिताएंगे, वहाँ बहुत स्टोरीज हैं, बहुत ज़्यादा. तो हमने वहाँ पे 2 दिन बिताए वहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर्स के साथ, फार्मर्स के साथ, ये समझने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, what are the kind of crops they grow, why do they grow, and how much money do they make. वहाँ पे एक राइस है, it's called काला नमक राइस. काला नमक राइस इज़ अ ब्रिलियंट सोल्यूशन फॉर पीपल विद डायबिटीज़. और मैं ये कुछ महीने पहले ये कहानी कर आई हूँ. जब मैं गई थी देवरिया, तब से लेकर आज तक आई ओनली ईट काला नमक राइस. इट्स लो ऑन ग्लाइसेमिक इंडेक्स. माई मदर इज़ अ डायबिटिक पेशेंट. इट्स वर्कड वंडर्स फॉर हर. और हमने वहाँ पे एक ऐसा कैंपेन किया, एक ऐसा प्रोजेक्ट किया जिसमें हमने बहुत मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को इन फार्मर्स के साथ बिठाया to understand why is Kala Namak rice not famous in India. So now we've been able to promote that rice. That rice is an ODOP product, which is one district, one product. But they still don't get the right market. They still don't get the fame that they deserve. So we're trying to work on that with them. बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ की एक तरफ जब हम इतने बड़े शहरों में ट्रीज़ और डिफॉरेस्टेशन की बातें करते हैं, इन विलेजेस दे आर ऑब्सेस्ड विद वन banyan tree. और उस banyan tree को कोई छू नहीं सकता है क्योंकि वही एक मीटिंग स्पॉट है, वही एक पार्टी स्पॉट है, वहीं पे सब लोग बैठ के कहानियाँ सुनते हैं. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि हम इन्वायरमेंट को वी लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल.
We say हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी अलग है और environment अलग है, but in tier 2 cities and villages, it's a part of their life and it's not a different conversation. Recently, I also went to this place called Gunjung. It's in Assam. It's on Assam-Nagaland border. Beautiful place. वहाँ जाके one big learning was those people don't understand or know the concept of a market. वो जो उगाते हैं अपने लिए उगाते हैं, जो बच जाता है बेच देते हैं, जो पहनते हैं खुद बनाते हैं, जो बच जाता है बेच देते हैं. But they don't go to a market to get anything. They're very self-sufficient. बहुत सी चीज़ें जैसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन की बात हो रही थी सुबह, बहुत से लोग इतने सालों से बोलते आए हैं कि लैंड को जलाना फिर उसके ऊपर क्रॉप उगाना कितनी गलत बात है. It spoils the land. But those people survive on it and they've been able to take care of that land for so many years, doing what they do. So ऐसी बहुत सी कहानियाँ जो हमें रूरल एरियाज़ में ट्रैवल करके पता चली हैं. Recently we also traveled to Itanagar in Arunachal Pradesh. हम हमेशा बोलते हैं कि North East is far away. It's just far away from our perspective, not in distance. It's very easy to go to North East, but we don't talk about it enough. North East में जाके हमने North East जाने के थोड़े दिन पहले I started a show called Let's Talk Bamboo. And that show was only for conversations around bamboo, but from different perspectives. What does a journalist think about bamboo? What does a consumer think about bamboo? How is an entrepreneur making money from bamboo? What does a farmer think about bamboo? We got stories from at least 5 states, including Maharashtra, Karnataka, Goa, Arunachal, Assam. And we traveled to most of these states to bring out stories. We did stories on how they cook in bamboo in Arunachal, they eat in bamboo, they construct with bamboo, and how they make money and still respect the forest. They still don't take more than what is required, and they leave enough for the forest to grow back. ये सारी stories देख के we realized that इंडिया में अगर कन्विंस करना है लोगों को टू शिफ्ट टू सस्टेनेबल लिविंग और क्लाइमेट फ्रेंडली लिविंग, यू नीड टू ब्रिंग आउट स्टोरीज. अगर कहानियाँ हैं तो हम सुनते हैं, अगर फैक्ट्स हैं तो हम यूजुअली बोर हो जाते हैं. एंड दैट्स जस्ट द रियलिटी, विच इज़ वाई इट्स बिकम a responsibility for us to go through extensive reports, to go through extensive research papers and then simplify it for people to understand and then bring out stories. जब भी हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन की बात करते थे, वी अंडरस्टूड दैट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक सस्टेनेबल आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट. पर जैसे ही आप बोल दो कि केरला के घरों में आंगन क्यों होते थे, फॉर बेटर वेंटिलेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत डिफरेंट स्टेट्स में होती थी, आप उस स्टोरी में एक आइडेंटिटी जोड़ दो तो बहुत सारे और लोग भी बोलते हैं कि नहीं ये तो राजस्थान में भी होता है. दैट्स हाउ वी लिव्ड, एंड दैट्स व्हेन यू गिव एन आइडेंटिटी टू अ स्टोरी एंड यू लेट पीपल फील प्राउड अबाउट व्हाट दे हैव. इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करने के लिए वी स्टार्टेड अ न्यूज़ लेटर कॉल्ड क्लाइमेट एक्शन द इंडियन वे. That newsletter talks about how climate action is a part and has been a part of our life and our existence. बहुत छोटी छोटी चीज़ें. When you go to Starbucks these days, you see something called turmeric latte. It's हल्दी वाला दूध दादी देती थी, नानी देती थी. And all of these things जो अब wellness के नाम पे हम ब्रांड कर रहे हैं, पैकेज कर रहे हैं, they've been a part of our kitchen, right? But Indians इन चीज़ों को तभी सीरियसली लेते हैं जब बाकी कंट्रीज़ में बोला जाता है that it's a great solution. वही चीज़ मखाना के साथ हुई. आई एम फ्रॉम बिहार. हम अभी बात कर रहे थे गौरव जी, जब हमने बात की कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार एंड सो इज़ ही, तो मैंने एक बात बोली कि मैं बिहार से तो हूँ पर मुझे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, मैं कभी रही नहीं हूँ. दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. वी हैव डन अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑन हाउ फ्लड्स इन बिहार टेक अवे लैंग्वेजेस. जब बाढ़ आती है लोग शहर मूव हो जाते हैं, लोग गाँव छोड़ देते हैं. और जैसे कि हम बोलते हैं कि एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड अ हैबिटेट, वैसे ही भाषा को भी एक जगह चाहिए होती है ठहरने की, वो जगह ही चली जाती है. सो पीपल स्टॉप स्पीकिंग देयर लोकल लैंग्वेजेस एंड दे स्विच टू हिंदी एंड इंग्लिश. आई एम वन ऑफ देम, राइट? सो देयर आर सो मेनी products, there are so many stories that we're trying to revive and tell people that while one part of the world is obsessed with innovation, technology, and so are we, but there's a lot of innovation and there's a lot of wisdom that is in India to solve climate change. हमने बस एक गलती की है, हमने उस विजडम को एंशिएंट बोल दिया है. तो अब हम उस विजडम पे वापस नहीं जाना चाहते ये सोच के दैट इट बिलोंग्स इन द पास्ट, बट दैट इज द फ्यूचर. अ लॉट ऑफ स्टोरीज दैट वी डू ऑल्सो प्रमोट green businesses, and this is to all the young people sitting here. I've interacted with some of you today and I've also interacted with some of you yesterday. How a lot of youngsters today are worried about what to do.
Whenever I interact with colleges, this is the 20th educational institute that I'm speaking at in the last 1 year, I think. Everywhere, a lot of people say to the youngsters that it's so easy now, ab to bahut options hai, you can be whoever you want, you can pursue whoever you want, whatever you want. But it's also confusing because now there are just too many options. And there are students I know a lot in these rooms after the wonderful presentations that you showcased. All of you are interested in climate and all of you want to solve the climate crisis. But how becomes a question. Every business, every job in this country and the world will eventually be green. Everything will become green, focusing on the environment, focusing on climate action. Right? So the only thing that you need to focus on right now is to be aware of what's happening. Understand climate change. Understand how it affects you. Understand how it affects different sectors. And then try to put yourself in a position where you can expose yourself to these opportunities. Every business, every startup that we have showcased on News with Navya has done brilliant work in climate action. But do they only belong to one sector? No. There are companies in waste, there are companies in fashion, there are companies in construction. There's so many companies doing brilliant work and all of them want to solve just one problem, which is climate change, but in different capacities. So the idea is to first start being aware of what's happening around you. It's not a trend. Climate change is not a trend. It's not here for a few months. This is the new normal. So the idea is to first accept it and second, understand what you can do about it. A lot of stories, as I mentioned, are a little different from the usual climate stories that we do. We did a newsletter recently on Vastu Shastra. वास्तु शास्त्र ये कहता है आज के डेट में कि अगर आप अपना बेड एक तरीके से लगाओ तो वो आपके लिए लकी होगा. अगर आपने घर में एक चीज़ एक तरीके पे लगाई, एक जगह पे लगाई तो वो आपके लिए लकी होगा. बट इट वॉज नेवर अबाउट लक. इट वॉज अबाउट घर में धूप कहाँ से आती है, हवा कहाँ से आती है. That is sustainable living. That is actual sustainable construction. आज के डेट में जो ग्रीन आर्किटेक्चर के बारे में कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, आई थिंक वी आर नॉट टॉकिंग इनफ अबाउट व्हाट वी ऑलरेडी हैव. क्यों हम बोलते थे पहले कि जहां आप घर बना रहे हैं उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जो ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं या जो मटेरियल मिल रहा है उससे घर बनाइए. दैट इज लोकल मटेरियल, दैट विल स्टे, दैट विल सर्वाइव. बहुत सी ऐसी स्टोरीज हमने अरुणाचल में की वेयर वी सॉ द मोस्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होम्स बिल्ट आउट ऑफ बैम्बू. और वहाँ कितने अर्थक्वेक्स आते हैं बट दे हैव नॉट मूव्ड अ बिट, वेयर एज द कॉन्क्रीट होम्स आर ऑल इन अ वेरी बैड कंडीशन. बिकॉज लोकल कम्युनिटीज़ जो वहाँ बिलोंग करते हैं उनको पता है. जब आप उनसे बात करेंगे वो बताते हैं कि जब हवा एक साइड से आती है मतलब आंधी आने वाली है, दूसरे साइड से आती है तो मतलब नॉर्मल है. वो वैसे ही समझते हैं नेचर को. अ फ्यू ईयर्स अगो व्हेन अंडमान एंड निकोबार विटनेस्ड cyclones, when there was a cyclone in the Indian Ocean, the local communities, the tribal communities and the animals, they moved away from the main city and the main land a few days before the cyclone because they understand nature. They knew something was going to happen. But हम जैसे लोग जो अभी भी pretend कर रहे हैं कि नहीं हमें तो पता है, हम nature को समझते हैं, we were the ones who were compromised in that cyclone. So it's all about the relationship that you build with the environment, and that relationship is primarily on understanding. Understand the environment around you, understand how it impacts you, and understand most importantly how you impact the environment and the nature. We've been talking about Himalayan floods since morning and what's happening in Uttarakhand, what's happening in Punjab. I have lived in all of these areas. I come from a defense background. I've also seen how in the last 10 years most of these cities and states have transformed completely. They are not the same anymore. But the idea is also every time you interact with a local in these states, a person who is dependent on the forest, a person who is dependent on that water body, they will tell you that this is not development. अभी का जो definition है development का वो concrete है, वो decoration है, वो development नहीं है. Development is when you build in keeping in mind the environment, when you build in tandem with the nature, when you build by understanding what's going to happen to the nature when a certain building comes up here. That's exactly what's going wrong in Uttarakhand, in Himachal, in Punjab, in so many other places. That's the kind of conversation we want to start. A lot of damage is already done and we can't reverse that. But what we can ensure is that this does not become the new normal, and whatever we construct from now on is mindful.
Several other stories that we've done also talk about community participation, and there was a brilliant presentation as well on community participation and community role, and I think that's the way forward. हम जब भी कोई भी climate related problem solve करना चाहते हैं इस देश में, I think community has to be a priority because the knowledge and the understanding that they have is unparalleled, and we can't have that because we live in cities and we don't understand nature the same way. Another thing that I've said multiple times is governments can fail, policies can fail, they can be ineffective, but people need to step up and communities need to step up. बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो अभी भी बाहर नहीं निकली हैं. हम झारखंड में बैठे हैं, हमने यहाँ की कोई कहानी नहीं की है. हम यहाँ से कोई रिपोर्ट्स नहीं सुनते हैं ऑफ communities coming together and doing anything. ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, but we don't highlight that enough. We are still, the moment we talk about climate, I know it's urgent, but we talk about Himalayan states, we talk about different states, we don't talk about Bihar. बिहार में तो हर साल बाढ़ आती है, उसका तो कोई हिसाब भी नहीं है कितने लोग अफेक्ट होते हैं. We don't talk about Bihar, we don't talk about Bengal, we don't talk about Jharkhand. We should take pride in all of these issues and all the solutions that we have. कितनी एंशियंट सॉल्यूशंस, कम्युनिटी सॉल्यूशंस होंगी झारखंड में जो नेशनल लेवल पे हाईलाइट होनी चाहिए. एक स्पॉटलाइट करना ज़रूरी है. दूसरा पॉइंट इज़ टू इंश्योर दैट इट सेट्स अ प्रेसिडेंट फॉर अदर स्टेट्स टू फॉलो. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एट न्यूज़ विद नव्या. वी आर ट्राइंग टू सॉल्व क्लाइमेट चेंज by encouraging people to work in different sectors. आज अगर मैंने कोई वीडियो किया है क्लीन एनर्जी पे, हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों को वो बोरिंग लगे बिकॉज क्लीन एनर्जी उनको नहीं समझ आ रहा है. But the other day if I do a video on wildlife, maybe somebody is interested because that person likes wildlife. The idea is to talk about it from different lens, and the idea is to contribute to climate action in different perspectives in different sectors. In the end, I just want to say that there are a lot of stories, and India is a country of stories. We have to bring out the right stories, be it solutions or problems. I'm not saying stories are always positive, both sort of stories, but the idea is to have the right intent, the right impact, and the right action to really solve this crisis. Thank you.